हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल pythonji। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन अ डेटाबेस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू गो टू सर्च बार एंड सर्च फॉर MySQL. Open it, enter your password, then you can see welcome to the MySQL monitor. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। उससे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम अपने सारे टेबल्स को स्टोर करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल फर्स्ट। तो उसके लिए हम पहली क्वेरी लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और हम अपने डेटाबेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं। सो मैं इस डेटाबेस का नाम रखूंगी pythonji। सो क्वेरी ओके। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे। सो उससे पहले हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है। एज यू कैन सी, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है। तो हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास कितने डेटाबेस हैं। तो उसके लिए दूसरी क्वेरी लिखेंगे सो डेटाबेसेस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो इसमें से हमें pythonji यूज़ करना है। हमने क्रिएट किया और ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो हमें pythonji यूज़ करना है और इसके अंदर हमें बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करने हैं। सो हम अगली क्वेरी लिखेंगे यूज़ pythonji डेटाबेस चेंज्ड। सो अब हम जो भी टेबल्स क्रिएट करेंगे वो सब pythonji के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। सो इस वीडियो में हम 4 टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं, प्लेयर टेबल, मैनेजर टेबल, पेशेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो पहला टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे क्रिएट टेबल प्लेयर, देन फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसमें प्लेयर आईडी इंट, देन प्लेयर नेम varchar 50, then date of birth, which is then birthplace varchar 150. So as you can see, query okay. Then we have to create next table, which is manager table. So manager ID is a primary key, unique key. Then we have to check that manager ID between 1 and 10. So m name can't be varchar, then in dob date, and then not null. Query okay. So table manager is created also. Then we have to create patient table. So you can paste whole query just in a click. Then patient name,
area. Query okay. So patient table is also created. At last, we have to create a table student. So roll number is a primary key, then student name, which can't be null, then date of birth, then contact number, varchar 150. Query okay. So in this video, we created a database and we saved 4 tables in a database. So how can you check that all the tables are created in database pythonji? So for this you have to write a command, query show tables. As you can see, tables in pythonji, manager, patient, player and student. So this table is created. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. बाय बाय. लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो फॉर